Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are discussing the Crucible, and in this series, we'll be discussing the introduction and the complete text of the Crucible by Arthur Miller. So we already know Arthur Miller from Death of a Salesman. He was a great writer of that. Today, the Crucible. So this is written about Salem and the history of Salem. So Salem in 1692, it was a time when there were famous witch trials. So Salem witch trials were a series of hearings and prosecutions of people accused of witchcraft in colonial Massachusetts between February 1692 and May 1693. So more than 200 people were accused. They were found guilty, and 19 of them were executed by hanging. So this is what happened in reality. कि सैलम जो कि मैसाचुसेट्स में है इन अमेरिका, न्यू इंग्लैंड कहा जाता है इसको। न्यू इंग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोग यहाँ पे जो सेटलर्स थे, बेसिकली ये वो प्यूरिटन्स थे जिनको अपने प्यूरिटन एज में पढ़ा। सो दे वर हार्ड हार्टेड एंड दे वर स्टॉन्च एंड स्ट्रिक्ट इन देयर रिलीजन। तो ये उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए ओपनली, ताकि इन्हें कोई और रोके ना, क्योंकि इंग्लैंड में इनके खिलाफ भी कुछ लोग थे। सो दे केम टू अमेरिका, और अमेरिका तब एक कॉलोनी थी इंग्लैंड की, 13 कॉलोनीज में बटा हुआ था, इंग्लैंड के प्रेशर में था, उसके कंट्रोल में था, डोमेन में था। सो ये लोग प्यूरिटन्स यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके उन्होंने अपना चर्च एस्टैब्लिश किया। फिर लोकल रहने वाले इंग्लिश पीपल जो कि पहले यहाँ पे सेटल हो चुके थे अमेरिका में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में आके सेटल होना शुरू हो गए। सो दैट्स व्हाई द प्लेस वाज नेम्ड एज न्यू इंग्लैंड। अब जो टाइटल है क्रूसिबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इट इज अ सिरेमिक और मेटल कंटेनर in which metals or the substances may be melted or subjected to very high temperatures. या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि a situation of severe trial or in which different elements interact leading the creation of something new. कि एक ऐसा मेटल कंटेनर, एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर हम देखते हैं कि सब्सटेंसेस को डाला जाता है और हाई टेम्परेचर पे चेक किया जाता है कि उनका क्या रिजल्ट निकलता है, या ऐसी सिचुएशन जिसमें वो पुराने सब्सटेंसेस एक नई शक्ल ले लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट ट्रायल्स which happened in 1692 Salem, जिसकी मैंने बात की कि जिसमें 19 people they were hanged for no reason at all, कोई कसूर नहीं था लेकिन उन्हें लटका दिया गया। Furthermore, we come to know कि there was Mccarthyism. So ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। So Mccarthyism जो था वो it was a practice of making execution of treason, especially when it was related to communism. So Joseph McCarthy was a US senator, and he was there in 1940s to 50s. Basically, it was in McCarthyism, it was between a tussle between leftist and rightist, यानी रशिया और अमेरिका, इनके दरमियान की एक टसल थी कि अमेरिका was representing capitalism और यूरोप, और जो रशिया था that was representing communism. So उसमें भी फिर ऐसे ट्रायल्स चले थे हिस्टोरिकली, जिसमें हर उस शख्स को जिस पे शक होता था कि ही मे बी अ कम्युनिस्ट, उसको पकड़ के मार दिया जाता था या लटका दिया जाता था. So all was going side by side. So this was really very common. We come to know that all these people in this whatever you say, this trial, whether it was witchcraft trial or whether it was Mccarthyism, communism trial, ये दोनों आपस में काफी हद तक मिलते जुलते हैं. So Crucible जो ये play है, that is representing both the incidents. ये Salem witch trials को भी represent कर रहा है और उस communist और capitalist war को भी represent कर रहा है. इसमें हमारे पास एक जॉन हॉथरॉन, एक जज है जो हम एक कैरेक्टर देखेंगे
वो एक रियलिटी पे बेस्ड कैरेक्टर जॉन हॉथरॉन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जज था। वो इस ट्रायल को देख रहा था, उसके कहने पे बहुत सारे बंदों को मारा गया, बेगुनाह मारा गया। नेथानियल हॉथरॉन, ये इसका आई गेस लाइक इसकी फैमिली में से था, आई गेस इसका ग्रैंडसन था, जो कि अमेरिकन नॉवेलिस्ट है। सो उसने अपने आबाओ अजदाद की इस गलत फैसलों से अपने आप को दूर रखने के लिए अपने नाम के साथ HAWTHRON लिख लिया। उसने जो W का इजाफा किया वो इसलिए कि ये कहीं से इसकी आइडेंटिटी अपने ग्रैंडफादर उनसे ना मिले, क्योंकि ये उनसे उनके इस चीज के खिलाफ था, जिस तरह उन्होंने इतने लोगों को मारा। अब जो क्रूसिबल है बेसिकली दैट इज अबाउट अ विलेज इन सैलम। एक सैलम के अंदर एक विलेज है, और यानी विलेज इज सैलम बेसिकली, और वहां पे कुछ लोग हैं जो रहते हैं, जो उनके रिहायशी वहां के आबादकार हैं। अब उन लोगों में फ्रैक्शंस हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन फ्रैक्शंस, सर्टेन सोसाइटल इश्यूज आर देयर। सो पहले हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि व्हाट डज टेक्स्ट से अबाउट इट। So, we have characters like we have Reverend Paris, Betty Paris, Tituba, Abigail Williams, Susanna Walcott, Mrs. Ann Putnam, Thomas Putnam, Mercy Lewis, Mary Warren, John Proctor, Rebecca Nurse, Martha Corey, Reverend John Hale, Elizabeth Proctor, Francis Nurse, Ezekiel Shiver, Marshall Herrick, Judge Hawthorne, जिसका मैंने जिक्र किया, Deputy Governor Danforth, Sarah Good, Hopkins, and Giles Corey. So these are the people who are there in the play, वो इस play का हिस्सा है। So we come to read from here. हम इसको यहां से पढ़ते हैं। A small upper bedroom in the home of Reverend Samuel Paris, Salem, Massachusetts, in the spring of the year 1692. तो ये 1692 का एक स्प्रिंग टाइम है, और रेवरेंड सैमुअल पैरिस जो कि इस जगह का प्रीस्ट है, पादरी है। सो दिस इज हिज प्लेस, अपर बेडरूम है उसका। सो यू नो के द प्रीस्ट वर गिवन प्लेस विद इन चर्च, और नीचे चर्च की प्रोसीडिंग्स होती थी, ऊपर इनकी रिहाइश होती थी। सो ही वाज लिविंग देयर। दिस इज अ नैरो विंडो एट लेफ्ट, थ्रू it leaded panes the morning sunlight streams. तो रोशनी अंदर आ रही है। A candle still burns near the bed, which is at the right. A chest, a chair, and a small table are the other furnishing. At the back, a door opens on the landings of the stairway to the ground floor. The room gives off an air of clean spareness. The roof rafters are exposed, and the wood color are raw and unmallowed. As the curtain rises, Reverend Paris is discovered kneeling beside the bed, evidently in prayer. His daughter, Betty Paris, aged 10, is lying on the bed inert. So here we are told about this scene. This is a church, a house, a room within the premises of church in which Reverend Paris is sitting on his knees and he is praying. और उसकी बेटी बैकग्राउंड में जो बेड पे लेटी हुई है, 10 years की बेटी पैरिस, शी इज अनएबल टू मूव, वो हिल नहीं पा रही, वो बिल्कुल खामोश है और बेहोश हुई हुई है। तो यहाँ पे अब whenever you read the Crucible text, what people do is they ignore this initial writing. So ये जो initial description है about the Crucible, this is very important, because this tells you all about those people, their working, their dealings, their behavior, their habits, their lust for a certain thing. So इसको मैं आपके सामने एक शॉर्ट फॉर्म में हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की जा रही हैं। अब बेसिकली इसमें क्या है कि एट द टाइम ऑफ दीज इवेंट्स पेरिस वाज इन हिज मिडिल 40s। ये जो जिस वक्त की बात उसमें की गई, जो पेरिस है
अपनी like 44-45 years का होगा. In history, he cut a villainous path, and there is very little good to be said for him. And people are against him. They don't, like many people, don't want him to be the priest. There are several reasons behind that. He believed he was being prosecuted wherever he went, despite his best efforts to win people and God to his side. Like he was trying to win the hearts of people, but was never successful. In meeting, he felt insulted if someone rose to shut the door without first asking his permission. So this was his ego, that everyone should be asking for his permission, since a person was in the church. He regarded them as young adults, and until this strange crisis, he, like the rest of Salem, never conceived that the children were anything but thankful for being permitted to walk straight, eyes slightly lowered, arms at sides, and mouth shut until bidden to speak. So this was his belief, and so was the belief of rest of the Salem, कि बच्चों के बारे में उन्हें था कि बच्चे बड़े चुपचाप रहें, खामोश रहें, नजरें झुका के रखें, कोई उनके अंदर मौज मस्ती ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, और वो तब तक ना बोलें जब तक उन्हें बोलने को ना कहा जाए. सो बच्चों की जो मासूमियत थी, इनोसेंस थी, उससे भी इस सोसाइटी में, स्पिरिटन सोसाइटी में बड़ा सब्जुगेट किया जाता था, दबा के रखा जाता था. अब यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे वी कम टू नो कि इसका जो घर है वो टाउन में है. सो विल बी गोइंग फास्ट इन दिस. अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ये रहता था बारबाडोस में, और बारबाडोस में ही वॉज अ गुड मर्चेंट, और ये वहां से आया, तो इसके साथ एक नीग्रो स्लेव थी टिट्यूबा, ये उसको लेके आया. यहाँ पे सैलम में क्या है? सैलम के अंदर कोई लाइक नाच गाना नहीं है, ये मना करते हैं, ईवल वर्क समझते हैं, नोवेल रीडिंग को ईवल वर्क समझते हैं. ये कभी भी लोगों को परमिशन नहीं देते कि वो डांस करें, गाना गाएं या जंगल में जाएं, क्योंकि जंगल इनके लिए ईवल का घर है, ईवल जंगल में रहता है. और वो क्यों इस तरह कहते थे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे इस जगह पे रहने वाले जो कि ईवल, लाइक जिनको ईवल समझा जाता था, यानी रेड इंडियंस. सो व्हेन दीज इंग्लिश पीपल केम फ्रॉम इंग्लैंड, और जब इन्होंने काबू किया, तो जो नेटिव पीपल रेड इंडियंस थे, सम ऑफ देम कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड सम ऑफ देम फ्लेड अवे. लड़े, उन्होंने मारा भी, वो कत्ल भी हुए, और वो भाग गए जंगलों में. उन्होंने अपने आप को वहां पे सेव किया. यहां से दो चीजें सामने आई. एक तो जंगल को कहा गया कि चूंकि वो जंगल में भाग गए, वो काफिर लोग हैं, तो जंगल में डेवल रहता है. सेकंड चीज जो सामने आई वो ये आई कि जब वो लोग भागे तो उनकी जमीनें थी. जारी बात है, किसान थे, काम करते थे काउबॉयज से, तो उनकी जमीनों को हथिया लिया गया. तो जिसका जितना जोर पड़ता था उसने उतनी अपनी लैंड लस्ट दिखाई, और बहुत सारे इलाकों को, क्योंकि उस जमाने में ये इश्यूज तो थे नहीं कि प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था, माइट इज राइट. सो इस तरह बहुत सारे लोग थे इसमें जिन्होंने इन जगहों को हथियाया. जॉन प्रॉक्टर was a person here in this who is protagonist of the play, who is like a protagonist है, main character है, और this is basically about individual and society. कुछ individuals हैं जिनकी थिंकिंग सेन है, वो बाकी सोसाइटी से हट के सोचते हैं, लेकिन इन द एंड सोसाइटी का जो प्रेशर है वो उन्हें टॉपल कर देता है, उन्हें मार देता है. सोसाइटी से वो बच नहीं सकते. सो हम यहाँ पे वी कम टू नो कि जो क्रिश्चियंस हैं, दे आर दोज हु अबाइड बाय द रूल्स सेट बाय द चर्च, जिसमें संडे को चर्च पे आना भी उनके लिए एक्सेप्टेबल है और जरूरी है. और जो इसको नहीं एक्सेप्ट करता उसको समझा जाता है कि शायद ये डेविल के असर में. सो हियर वी आल्सो कम टू नो कि बहुत सारे लोग थे जो कि मैसाचुसेट्स, वर्जीनिया, इन इलाकों में शिफ्ट हुए. लेकिन जो सैलम था, इसमें आसपास ये 2-3 जो गांव थे, उसमें ये विच हंट, विच ट्रायल्स शुरू हुए, और जिसमें सदाकत नहीं थी, लेकिन अफवाहें ज्यादा थी, जिन अफवाहों को लोग लेके चले. सो बेसिकली दिस इज अबाउट द लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टू.
सो ये जो विच हंट था, दिस वाज नॉट अ मेयर रिप्रेशन, ये सिर्फ रिप्रेशन नहीं था, बल्कि ये विक्टिमिटाइज करने की भी एक कोशिश थी कि लोगों को अपने मकसद के लिए मारा जाए, लोगों को अपने मकसद के लिए कत्ल किया जाए। सो इस चीज को मुख्त उन लोगों ने जो कि लैंड लस्ट रखते थे, उन्होंने बड़ा फायदा उठाया उस चीज का। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रूसिबल।